Okay, so we are in the process of learning to figure out what are the common weaknesses that we might have that may result in getting our paper rejected. We are moving from, on this axis, we are moving from rejected, bad, okay, and pretty good, and maybe original. So writing plays a very important part. Drafting your paper plays a very important part in traveling this axis. You might have very good results, but if you aren't able to publish it, so world will not appreciate your work. So last time we were talking about few common issues that occur. तो क्या हैं वो? क्या थे वो? There were 3 or 4 issues that we were discussing, which can result in getting your paper rejected. तो ये हम डिस्कस कर रहे थे कि when someone receives a paper, तो जो हमें किसी ने बताया है वो ये 5 we were talking about this, that 1 by 3 are obvious rejects. So we are trying to figure out that these are technical papers and it's not obvious to reject a paper. It's something technical. You might want to read it first to find out if there is any contribution. So how is it that this person is telling us that 1 by 3 are obvious rejects? You just look at the paper and you know that this is not going to make the cross the line. So first of all, this is our aim, that we should not be doing this. तो अब आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट तो लिखना शुरू कर ही दी होगी. तो इंशाल्लाह after OST you will submit your report and then we will move from there. So they are saying that, okay, first of all we want to get out of this zone of obvious reject, and then okay, once in a while world changing idea happens, but you want to get out of this first category and move on to the third category, ye jo borderline hai. So you have created like a chance for yourself in the mind of the reviewer that maybe this paper has some value. Once the paper gets in and it is published, time will decide which paper was the most important contribution. So one never knows. If you look at the lifetime of highly cited papers, maybe they were not awarded the best paper award in the conference in which it was accepted. तो मैंने आपको बताया है कि कॉन्फ्रेंस में अगर पेपर एक्सेप्ट होता है तो which जिसके रिव्यूज बहुत अच्छे होते हैं, it gets the oral that you get to present your work. और फिर जो है सेकंड कैटेगरी होती है पोस्टर, that you are there, you are attending the conference, but you will not be able to present up. You will be standing in a hall with your poster, and people who are interested in your research, they will come to you and ask questions. So every conference has few orals and many posters. So getting an oral acceptance is for that you need to, and from these orals maybe there are few papers which the reviewers have really given excellent reviews, and the managing people who are managing the conference, they decide, okay, which are the top contributions, and then one of them will get the best paper award. So most of the conferences have best paper award, and then there are different categories: best student paper and best demo. So there are these
awards. And if you get the best paper award in the best conference, then you are considered as the star researcher. So anyhow, first you need to get the paper accepted, and then there are these milestones. An interesting thing would be that all those papers who were labeled best papers, maybe 10 years down the line, they were not the ones who got cited most. Maybe a simple approach was cited more because everybody could use it. For example, if I develop an approach which requires a supercomputer, not many people will be able to use it. So my simple approach, maybe it's not very novel, it gets used more, it helps more research, so I get cited more. So this is one direction. So so we are in the borderline category, and we were discussing this guy, he has decided कि भाई दो तरह के borderline हैं. दो तरह के नहीं है, borderline खैर एक ही है. एक तो जिसको वो cockroach बोल रहे हैं कि you read it, you don't find anything exciting about it, but you don't find any reason to reject it as well. All the requirements have been fulfilled. All the papers have been mentioned, recent references have been mentioned, figures are very good, text is nicely explained, there are no typos. So you are like looking for a reason, maybe what is the weakness if I have to reject this paper? Maybe the improvement over the last baseline is like 1%, but again it is an improvement, and I cannot simply say reject because the improvement is not good enough. Maybe other reviewers think otherwise, and then there is this debate and this paper gets through. On the other hand, you have this second option, very good idea, you are really excited about it, but then there are some obvious issues with the paper. So even though you like the research and you believe that if they further work on this problem, it will get published, but it is not ready at the moment. So that paper gets rejected. In the same conference, a similar idea gets accepted. So you see the loss. Now when you come in the next session, next conference, which is taking place 2 months down the line, 1 month down the line, 7 days down the line, this paper is the related paper. Now you have to show you are better than this approach. First of all, the novelty is gone. Somebody has done something similar, and now you have to prove that you are better and show some novelty. So this happens a lot of times. So we were trying to figure out those mistakes, and these were the mistakes we saw. इनमें से जो पहली चार हैं, they are not related to your work actually. ये किससे related है? आपने अपना काम कर लिया and you have your results. Now you have to convince the reviewers कि जो पहले काम हुआ हुआ है आप उनसे बेहतर हैं. So in the results section you have to prove it. तो हम अभी section by section लिख रहे हैं, हम देखेंगे कि कैसे हमने करना. बार last week I received one request to review a paper. मैं आपको दिखा देता हूँ. So you will get a live view of the what is going on behind the scenes. अब पढ़ें जरा ये क्या है. This is वो जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी ना, उसमें मे बी दिस इज थर्ड रैंक्ड, तीसरी पोजीशन है इसकी टॉप से इस जर्नल की.
तो कब मुझे मिली है ये ईमेल? और कब वो कह रहे हैं कि आप रिव्यू मुकम्मल करें? कितने दिन है? अगर जिस दिन मिली हो मैंने उसी दिन पढ़ ली हो तो 8 दिन है। 8 दिन में कोई संडे भी होगा कोई, एंड आई माइट हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अब दिस इज द रियलिटी। So I don't know how it happened, but this happens. Maybe some reviewer was busy. He said, "I cannot do it." So they were looking for other reviewers, and it's not necessarily that this is something which I have recently studied. This might be something which I have not recently surveyed. So I know generally what is going on, but I don't know what is the state of the art. तो वो लिखा तो हुआ है कि दिस पेपर इज इन योर एरिया ऑफ रिसर्च, दिस इज अ जर्नल स्टेटमेंट। तो अब जो है ना दिस मच टाइम आई हैव, और उसमें जो है ना आई हैव टू टीच एंड आई हैव टू प्रिपेयर योर एग्जाम। तो या पेपर एक्सेप्ट होगा या एग्जाम मुश्किल बनेगा। कोई एक जगह तो somebody is losing। ना मैंने पेपर देना है और ना मेरा पेपर है ये। तो एनीवे दिस इज द रियलिटी। तो अब आप ये देख लेंगे। तो व्हाट एम आई लुकिंग फॉर इन दैट पेपर? मेरे पास टाइम कम है, तो मैंने देखना है कि उसने इन पांच में से कोई गलती की हुई है कि नहीं की हुई। दिस इज माय, अगर मैंने ये फेयर एनालिसिस करना है तो before like reading the entire paper and understanding the approach, these are the big things I'm looking for. If the paper is weak in any of these points, there is no point reading and analyzing every line of that paper. तो लेट्स सी, अब मैं जब ओपन करूंगा तो फिर मुझे पता चलेगा कि क्या होगा। तो मैं भी यही 5 चीजें देख रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू के क्या, I will go and look at the last page and I will see are there recent references there। 2021 के पेपर्स हैं। अगर 2020 और 2021 उधर है तो आई एम ओके। अच्छा, फिर मैं देखूंगा कि सिर्फ पेपर्स हैव बीन मेंशन्ड या हमने कोई एक्सपेरिमेंट्स में भी उनको यूज किया है। तो देन आई विल लुक एट द फिगर्स और मैं समझने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पास टाइम बहुत कम है। अब ये राइटर की जिम्मेदारी है कि उसने इतना अच्छा लिखा हो कि मुझे कुछ परेशानी ना हो पढ़ते हुए, कि there are typing mistakes and I am getting annoyed। I have very little time, and sometimes people have to review more than one paper। तो last time we made a small paper of our own, किधर गया? And we started these are roughly the sections। So we were talking about abstract and introduction। तो title and names we are not here yet, but ये जो blue वाला डब्बा है ये हमने कर लिया है। तो क्या, what is the thing we are looking for in the blue डब्बा? क्या था ये इसमें? बेस्ट रिजल्ट, मतलब जो हमारी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है ना वो पहली या दूसरी लाइन में हमने बतानी है किसी तरीके से। तो वी कैन नॉट डिले दैट थिंग कि आई राइट वन पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल हम लास्ट टाइम हमने कोई फिल्टर डिजाइन किया था, तो फर्स्ट आई एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग एंड देन आई say something about the importance of filters and then I come to what I have done। तो it's game over। मैंने तो I will straight, अगर कोई पढ़ रहा है और मुझे मिल ही नहीं रही बीच में, I don't find the novelty in there। तो even if there it is hidden somewhere, I can easily say कि मुझे नहीं मिली। And I can, if I'm saying मैंने पढ़ा है और बाकियों ने भी इसी तरह पढ़ा होगा, तो they might agree with me कि it's not obvious what is the novelty। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ।
recent email if I can find. नहीं ये नहीं. This is one of the reviews we received for maybe our paper. तो ये 3-4 पेजों के रिव्यू हैं तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिए हैं. तो यहाँ पे क्या अभी मैं दिखाता हूँ आपको. दिस इज अ रफ ड्राफ्ट फॉर रिस्पॉन्स. यहाँ पे आप देखेंगे कहीं. दिस इज रिव्यूअर नंबर 1 and he is saying something. ये पढ़ें जरा लाइन क्या लिखी हुई है. तो he is not rejecting the paper but he is saying कि it will be easy for me if you write in bullet points. तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमें सजेशन है ना, some communities like it that way, some communities don't, but it is becoming very common in machine learning. This is what you do. आप अपनी सारी कहानी बयान करके नोवेलिटी, तो आप करते क्या है कि एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन चैप्टर यहाँ पे ना कहीं पे आप फाइनली समराइज कर देते हैं कि these are our contributions. बुलेट पॉइंट यहाँ पे हैं, बुलेट पॉइंट्स. एक मिनट. लेट्स सी. ये देखे ना, 1 दिस इज आवर. इसकी ना मैं हेडिंग दे देता हूँ की कंट्रीब्यूशंस. इस तरह का ना. तो आप बता तो सारे रहे थे, यहाँ पे कोई फिगर भी थी आपकी एंड यू आर मेंशनिंग अबाउट समथिंग. तो आपने एब्स्ट्रैक्ट में भी बताया, फिर भी हमने देखा था लास्ट टाइम कि आप अपनी फिगर बनाते हैं, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं हाउ यू आर बेटर देन अदर्स. तो यहाँ पे आप मोटिवेट करते हैं. फर्स्ट यू स्टार्ट विद मे बी सम सिंपल एग्जांपल, वो एक्सप्लेन करते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं कोई फिगर बनाकर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस, और फिर फाइनली व्हेन मे बी देयर आर मोर देन देयर इज मोर देन वन कॉन्ट्रीब्यूशन, एक मेजर 2 माइनर, तो फाइनली यू समराइज इन. जिस तरह ये फिल्टर्स के केस में क्या होगा, अ नोवेल और फिल्टर फॉर ऑडियो प्रोसेसिंग, बस ये एक लाइन हम लिख देंगे. तो इफ समबडी इज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू द पेपर तो उसको नजर आ जाएगा कि ये हम कहना चाह रहे हैं. तो ही और शी विल सी कि भाई नोवेल फिल्टर, सीधा वो एक रिजल्ट सेक्शन पे जंप करेगा, देखेगा अच्छा वो सारे फिल्टर हैं जो उसको पता है. अगर वो फिल्टर हैं और ये फिल्टर भी है और कंपेयर हुआ है, तो देन माय एक्सपेरिमेंटल सेक्शन इज सपोर्टिंग दीज कंट्रीब्यूशंस. तो वी हैव टू मेक दिस एक्स्ट्रा एफर्ट. तो ये हमारा हो गया. तो हम लेट्स गो बैक एंड सी कि इसमें क्या क्या चीजें थी. तो दिस वाज आवर इंट्रोडक्शन. कि बेस्ट रिजल्ट राइट अप फ्रंट, कंपैरिजन भी बीच में ही है. तो मोर एंड मोर वी आर फाइंडिंग आउट, अब दिस इज बिकमिंग अ स्किल कि हाउ डू यू समराइज योर वर्क इन अ वेरी नाइसली डन फिगर, at least for image processing and machine learning. So making this intro figure is one of the exciting times because you have the results and now you really want to summarize your work in one picture. तो इसमें ये है कि
if you develop skills with, for example, image editing softwares like Paint or GIMP, just few skills, ताकि आप जो है ना, you can make some nice figures with nice shapes. तो ये this will help you if you are like comfortable with making those diagrams. उसमें कहीं shade change करना है, कहीं focus करना है, कहीं dim करना है, so you can start practicing that. This is a very important skill. For example, in my lab, I remember there was one person who was very good in GIMP. So once we were done with our paper और सब कुछ ठीक हो जाता, तो then we used to go to that person, try to like add emphasis on the areas of the image. तो color scheme आप change करें थोड़ी सी, and all those skills you do in Photoshop, so that will really help you. तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन. उसके बाद ये देखें कितनी इन्होंने मेहनत की हुई है. एक्चुअली 3D रेंडरिंग की है इन्होंने अपनी तस्वीर अच्छी बनाने के लिए. ये फॉर एग्जांपल ये जो ये वाली तस्वीर है, दिस इज लाइक शोइंग डिफरेंट शेड्स. यू कैन गेस के इसका शेड और है और इसका शेड और है और दीवार का शेड और है. तो दे हैव गॉन an extra mile to show how much they have extracted the information. So then we talked about this, that one should not be worried कि आप अगर आप सादा बात से start कर रहे हैं तो आप you are worried कि नहीं मैंने पहली लाइन में ही लिखना है कि लेटेस्ट डीप लर्निंग जो भी सिस्टम है उसका नाम आप लिखना चाहते हैं, और आप डीप लर्निंग भी लिखना चाहते हैं, आप मशीन लर्निंग भी लिखना चाहते हैं, आप एआई भी लिखना चाहते हैं, आप कोई मैथ का मुश्किल सा लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं, एंड यू वांट टू इम्प्रेस समवन, तो दैट इज अ दैट विल नॉट हेल्प यू. बट जनरली वी डू व्हेन यू विल बी राइटिंग, यू विल फील दिस थिंग कि आप यू वुड वांट टू यूज फैंसी वर्ड्स. तो ये इससे बेहतर ये स्ट्रेटजी है कि इफ यू हैव समथिंग difficult, sophisticated to explain, to start with a simple image or simple diagram and explain it, and then so again another example. For example, ये देखें ना आपने, इन्होंने they have used small portions of math as well in the caption. So this is a complete figure which will end up in, if this technique becomes the famous technique, so this will be the figure used in textbooks. जिस तरह भी मैं यूज कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, तो आई एम यूजिंग दिस फिगर एंड नॉट एनी अदर फिगर. तो abstract and introduction is clear. So we start simple, we show our best results, motivate why this result is important, and not focus too much on how we have done it. Generally we are very eager to start writing how we have done it, but we need to explain what we have done and it's better, and what will change if this is better, and then go into, then later on we will go into the technical details ke hua kaise. So if you can like separate these two things, your paper will be very accessible. That first I read and I am happy that अच्छा मुझे अब समझ में आ गया ये कर क्या रहे हैं, फिर अब मैं जाके देखूंगा कि आपने किया कैसे. And nowadays things are getting even simpler, that you provide the implementation. If you want citations, you have to give the implementation. और जब implementation मेरे पास आ गई है, तो most probably I'll be using your approach as a baseline to build upon. So even if I don't understand completely how you did it, I will know your weaknesses just by using your implementation. I will know your failure cases, and then I can start thinking, okay, maybe this face detector does not work if the face is like this. So I don't need to understand everything inside the paper to use it and to compare. So this again, once you are reading papers, this is the thing you should be looking at, results and what are the failure cases. Sometimes it's not obvious because paper में लोग अपने failure cases तो बताएंगे नहीं ना.
then you have to play with the code. You run it on your own data set. Run on especially those images जो कि author ने नहीं दी हुई. So then you really figure out कि अच्छा क्या मसला है इस पेपर के साथ. तो again, if you see something very difficult, नहीं समझ में आ रहा, बहुत ज़्यादा equations हैं, don't worry, just ask for the implementation. Most of the time people provide that implementation. और अगर नहीं देते तो email लिख दें. People are happy to help you because they are getting citations. So this is introduction, simple start. Why what you have done is important and you are actually better than the rest, and then we will go on to how we have done it. तो ये हो गया हमारा ये वाला section. तो this is our abstract and this is our introduction. तो already 3 मरतबा तो हम बता चुके हैं कि हम कैसे हमने नया किए. देखिए एब्स्ट्रैक्ट में बताया, इंट्रो में बताया, और फिर ये इधर भी समराइज किया. तो वी आर लाइक ड्रिलिंग इट इनटू द माइंड ऑफ द रिव्यूअर के हम वाकई नए हैं, हमने कुछ नया काम किया है. तो उसके बाद नाउ दी जो आपकी रिजेक्शन वाले पॉइंट्स हैं सारे, वो अभी आपने उनको एड्रेस नहीं किया. I can get motivated and I understand what you are trying to do. That's what introduction will do. कि हाँ मुझे लगता है कि आपने कुछ नया किया है और now I am willing to read the rest of the paper. अब जो ये this section which is coming now, this is the section, वो जो 6 पॉइंट लिखे हुए थे ना आपके, 6 में से कितने पॉइंट ये रिलेटेड वर्क से कितने हैं आप? 4 जो है ना वो रिलेटेड वर्क से हैं. Important. If I am promising something, I can only claim these contributions. ये 3 contributions मैं तभी claim कर सकता हूँ जब ये जो मेरा experimental section है ना, इसमें इन तीनों के results भी हों. ये जो तीनों बातें मैंने की हैं ना, इन तीनों के result होने चाहिए, और वो जो 4 points हैं वो मेरे जहन में है result देखते हुए कि आपने अगर, तो सबसे पहले आप यहां से शुरू होंगे. You will start mentioning all the papers which are related to you. ठीक है, यहां पे आप मेंशन करेंगे और यहां पे उनमें से जो सबसे रीसेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्लोजेस्ट टू योर वर्क हैं, दिस इज वेयर यू हैव टू शो द रिजल्ट्स. और हर पॉइंट के अगेंस्ट रिजल्ट होगा. जो जो पॉइंट आपने लिखा है, इफ यू थिंक कि यू आर वीकर ऑन सम पॉइंट, तो आप 3 से 2 कर दें पॉइंट्स को. एक भी कर दें तो भी ठीक है, बट जो आप लिख रहे हैं यू हैव टू बैक इट अप विद एन एक्सपेरिमेंट. तो मे यू माइट गेट रियली एक्साइटेड और आप जो है ना 5 पॉइंट लिख लें, और मेरे लिए कितनी आपने आसानी कर दी. मैं एक्सपेरिमेंटल सेक्शन में जाऊंगा, अच्छा मैं देखूंगा पॉइंट 1 ये रिजल्ट, पॉइंट 2 ये रिजल्ट, 3 का तो रिजल्ट ही नहीं है, 4 आप ऐसी क्लेम कर रहे हैं. तो यू आर जस्ट गिविंग मी एन इजी वे आउट. मैं कहूँगा the authors haven't provided enough evidence for the claims made in introduction. तो पहले मैं आपको कह रहा हूँ लिखें आप अपने, मुझे 1 2 3 करके बताएं. मैं नहीं टाइम ज़ाया करूंगा कि मैं पेपर पढ़ूं और मैं गेस करूं कि आपने छुपा के कहीं रखी हुई इंट्रोडक्शन. मुझे नहीं नजर आई, मैंने लिख देना है. मुझे नहीं पता चला, इट्स नॉट क्लियर व्हाट इज द की कंट्रीब्यूशन. जिस तरह अभी मैंने आपको दिखाया, हमें किसी रिव्यूअर ने कहा है कि आप लिख देंगे तो और आसानी हो जाएगी. तो अच्छा, अब now comes the related work section, and this is the section which is लेकिन जो ग्रीन वाला काम है ना, ये तो आपका है, ये आपने खुद किया हुआ है, ये आप लिख लेंगे. ठीक है, तो ग्रीन बॉक्स इज इजी फॉर यू. जब काम करेंगे तो कुछ रिजल्ट्स भी आपके पास आ जाएंगे. तो ये जो एक्सपेरिमेंट वाला, ये 2 सेक्शन ना, दे आर द इजीएस्ट फॉर यू टू राइट एज अ स्टूडेंट. यू डोंट नीड एनी स्पोर्ट इन इट. आपको लैटेक्स आता है, आपने इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन लिख लें, फिगर लिखनी है, फिगर बना लें. तो जिस तरह आपने किया, ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, तो आप जिस तरह किया है उसी तरह लिख दें.
ये किया था, ये हुआ था, उसके बाद ये किया था, ये हुआ था, इसकी वजह से ये किया था, उसके बाद ये किया था, और ये दिस इज योर मेथोडोलॉजी. So you need to like make it exciting. There has to be some flow in it. But this is what you can write. आपने खुद, you have lived this life for the last 1 year or 6 months. So you have to just narrate it in couple of pages what you have done, और वो results आ जाएंगे. तो the related work section is the tricky one because this involves history or this involves the work of other people, जिन्होंने, हो सकता है इन्हीं में से कोई आपका पेपर रिव्यू कर रहा हो. तो आपने ये भी कहना है कि हमने नया भी किया है, और यू वुड वांट के यू डोंट ऑफेंड एनीवन. तो अगर आप ये लिख देंगे वी आर बेटर देन द रेस्ट, तो मे बी यू आर बेटर देन द रेस्ट, बट ये सेंटेंस जो है ना, पीपल विल नॉट डाइजेस्ट इट इजीली. तो I wanted to show you one review that I got in 2013. What was the review? And one review that we received in 2020. तो 8 साल के फर्क के बाद वो रिव्यूज में आपको दोनों दिखाऊंगा जो मुझे पर्सनली रिसीव हुए. तो यू विल सी दैट दीज थिंग्स आर रियल. अच्छा, तो अब रिलेटेड वर्क वाली बात आ गई, तो हम लेट्स गो एंड लुक एट दिस. ये तो रीराइटिंग हो गई. अच्छा, वन ऑफ दी एंड एक तो ये कि यू वुड वांट टू यूज वेरी बिग वर्ड्स. Researchers don't get impressed by those difficult words. It's better to explain it in simple terms. And the second thing is that some people are worried that we are not very good in English, so we might not be able to write it. So when you are writing something technical, you don't need to be a Shakespearean language में नहीं लिखना होता आपने. You just have to write in simple sentences, simple short sentences. And if you don't make any typing mistakes or grammatical mistakes, then it is okay. The research world doesn't care कि आपने जो है ना कोई इंग्लिश ग्रामर में कोई बहुत ही फैंसी आपने स्ट्रक्चर यूज कर लिया सेंटेंस का. बस सादा छोटे सेंटेंसेस होने चाहिए. एंड नाउ देयर आर टूल्स विच वर नॉट देयर फ्यू इयर्स अगो. अब देयर, इफ स्पेल चेकर्स आर देयर, इवन सेंटेंस करेक्टर्स आर देयर. वर्ड में भी है, गूगल डॉक्स में भी है. यू राइट समथिंग, तो इट गिव्स यू एन ऑल्टरनेटिव कि इस तरह नहीं, इस तरह लिख लें. So now life has become simpler in that terms. So use those tools. But generally what I've seen is when you are writing your thesis and when you are writing your first paper, usually you are writing 12 बजे रात को deadline है और 11 बजे ना you are writing something. So you are not giving yourself enough time कि आपने अगर कोई टाइपो किया तो कोई दूसरा पढ़ कर बता दे आपको कि हाँ ये से गलती हो गई है. So it's always revisions are very important once you have written. So this is where the discipline comes in. You might be a very good researcher, but you are not willing to revise again and again and again. अच्छा, अब ये देख, लास्ट 2 आप पैराग्राफ्स पढ़ें. दिस इज वेयर वी आर एंटरिंग इनटू द रिलेटेड वर्क सेक्शन. जब दूसरों का काम बताना है तो क्या सेंटेंसेस यूज करने हैं? हाँ, इंटरेस्टिंग, रिमार्केबल. देन देयर आर सम सेमिनल वर्क्स जो कि वेल नोन वर्क है. सेमिनल वर्क, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है. तो आप बताते हैं कि मतलब जिस तरह आप, हमने फिल्टर बना लिया, लेट्स से हमने जो है ना मशीन डीप लर्निंग को यूज करके फिल्टर बनाया ऑडियो वाला. तो अब फिल्टर तो बहुत लोगों ने बनाए हैं ना. तो हाउ वुड वी स्टार्ट दिस सेक्शन? तो हम कहेंगे कि इन दी सेमिनल वर्क जो बटरवर्थ डिजाइन दिस फिल्टर यूजिंग दिस अप्रोच. तो खत्म हो गई बात. हमने बता दिया कि हमें वो जो बहुत इंपॉर्टेंट
and then Chebyshev improved that filter in this regard. अब हम बताते जा रहे हैं कि हम हिस्ट्री हम लिखते जा रहे हैं। फिर जब so you divide it into different paragraphs. जो different related works हैं, they will fall into different categories. Some are classic, तो उनके लिए अलग पैराग्राफ होगा। फिर जो आपकी अप्रोच से सिमिलर हैं उनके लिए अलग पैराग्राफ होगा। तो you divide it into different sections. And then when you are concluding every section, तो आप बताते हैं कि जी these are seminal works, but in this work we have used, for example, machine learning to design the filter. ताकि जो रिव्यूअर पढ़ता जा रहा है ना, तो उसको बारी बारी पता चलता जाए कि आप कैसे कैसे आप जो है ना मुख्तलिफ हैं इन सारों से। आपने सिर्फ इनको बयान नहीं करना, आपने कहीं ना कहीं बताना है कि यू आर डिफरेंट। तो आप मे बी यू कैन एंड दैट पैराग्राफ विद अ लाइन दैट in this work we are focused on designing filters using recent machine learning. पैराग्राफ खत्म, अगला पैराग्राफ आ गया। तो आप कहेंगे कि we are not the only ones who have done this. There are other machine learning approaches. For example, X et al did this, Y et al did this. उसने ये बेहतर किया, उसने ये बहुत जबरदस्त किया, फलाना किया। फिर आप बताएंगे वो बात जो उन्होंने नहीं की। However, in this situation, these filters जो है their performance is their performance degrades. जो हकीकत आपने लिख दी, ठीक है, तो आप पहले तारीफ करें, उसकी कंट्रीब्यूशन बताएं, और फिर जो है ना उसकी वीकनेस पे आप कमेंट कर दें कि जी ये है और वी ट्राई टू एक्सटेंड दी वर्क इन दिस डायरेक्शन। तो आप ये नहीं कह रहे कि हम उनसे बेहतर हैं, आप ये कह रहे हैं कि बस जहां उन्होंने कहीं छोड़ा था तो वी आर ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट टू इम्प्रूव। तो उनके लिए तो सारे वर्ड्स हैं इन एन इम्पोर्टेंट इन एन इंटरेस्टिंग वर्क, सेमिनल वर्क, ये लिखने होते हैं, क्योंकि दिस वे अ सीनियर रिव्यूअर गेट्स दैट यू नो व्हाट हैज हैपेंड बिफोर। अगर आप चेबीशेव फिल्टर और वजाहत फिल्टर के लिए एक ही सेंटेंस यूज कर रहे होंगे तो आई नो दैट यू डोंट नो मच अबाउट द एरिया, आपने बस किसी और पेपर से कॉपी कर दी है। यू नीड टू गिव द इनसाइट कि अच्छा, जब here you need your supervisor. So most of the times students they come and they think that they have like beaten the world, और जो है ना वो they are not ready to listen to the supervisor. तो फिर यही होता है कि supervisor is not interested. Supervisor says to you, okay, kindly share a draft with me by the end of this week, and you go on vacations for 2 months and then come back, और ये मैंने लिख दिया, आप पढ़ लें। Supervisor says, I don't care, भेजें आप, you will get the response which you deserved. तो here you need someone who is a senior researcher. So research is a team effort. So you need to look around who is actually the senior researcher, who can help me. So, and we will see that people who are like very senior researchers, they have skills to how, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। तो ये हो गया। और अपने रिजल्ट्स के लिए सरप्राइजिंगली दिस सिंपल अप्रोच गिव्स द बेस्ट परफॉर्मेंस। बस आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं, you don't say we beat the rest, or so you need to learn to be humble. कुछ अरसे बाद हम्बलनेस वैसे ही आपके अंदर आ जाएगी, जब आप वो 2-4 दफा लिख कर भेजेंगे और वो वापस भेजेंगे ना आपको, तो फिर आप, तो वो जो हमने ये अल्फा वाला पढ़ा था ना, ये जो बड़ी बड़ी जंपें आप लगाएंगे ना, तो ऐसा ऐसा वो आपका अल्फा ठीक करके ना यहाँ पे ले आएंगे आपको। तो आप जल्दी कर लें तो यू माइट सेव सम इयर्स ऑफ योर लाइफ। और the other thing is that you will be so disappointed by rejection that you will say, okay, this is too tough for me and I should go for a fake journal and low ranked journal, and then I will keep on hiding from others for the rest of my life. मैं कहूँगा सबको बताऊंगा मेरी 4 publications हैं, फिर मैं चुप कर जाऊंगा, मैं बताऊंगा नहीं कि किधर हैं, as if I wouldn't know कि आपका नाम क्या है और Google Scholar क्या चीज होती है। तो
So this is how we do it. तो but अब जो challenge है इसमें, वो challenge क्या है हमारे लिए? You started working on your thesis, your supervisor gave you maybe the latest paper to read and you started improving it, लेकिन आप 6 महीने गुजर चुके हैं, साल गुजर चुका है. तो now you have to go and revisit कि वो जो बेस्ट पेपर जिसको मैं improve कर रहा हूँ, what happened after that? This is the area where people get really nervous and disappointed. You are like, आप करते क्या हैं, वो जो आपका बेस पेपर है, you type it on Google Scholar और आपको पता चल जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेपर सर्च करना चाहता हूँ, आप भी जरा सर्च करें ये पेपर गूगल स्कॉलर पे. ये वाला पेपर सर्च करें जरा. टाइप दिस नेम ऑन गूगल स्कॉलर. पहले नहीं था गूगल स्कॉलर, थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट बैक देन. तो पता नहीं होता था कि अब असल में अभी व्हाट इज द स्टेट ऑफ द आर्ट. You had to visit libraries and you had to like talk to senior people. Ab things are very clear. Life is very simple. You click, you type this on Google Scholar, तो आपको पता चल जाएगा which other papers have cited this paper. तो if this was the recent paper, तो इसकी 10 citations होंगी, 4 citations होंगी, 20 होंगी, 50 होंगी, 100 होंगी. If this is the recent most, तो फिर इतनी ही होंगी अगर ये पिछले महीने पब्लिश हुआ है. ठीक है, ये तो खैर बहुत पुराना है ना, आप देखें कब पब्लिश हुआ है ये. This is one of the very famous papers. और तो आप recent कोई हम सर्च कर लें, आप कोई recent पेपर सर्च कर लें, अभी मैं आपको बताता हूँ, आप कर लीजिएगा. तो उसके बहुत कम citations होंगी. For example, the paper which we published recently, उसकी बहुत कम होंगी. तो if that is your base paper, then it is very easy to check कि अच्छा कौन है 2, 3, 4 पेपर जो. अब मुझे भी पता है और आपको पता है, रिव्यूअर को भी पता है कि उसको भी पता है कि इन 4 ने इसको साइट किया हुआ है. तो नाउ यू हैव टू गो एंड चेक कि आर दे जस्ट cited by books या survey papers या they have improved on that approach. If that is the case, you have to like add those papers in your related work section. ठीक है, तो and also you need to add comparisons. If there is no comparison, this is a reject, obvious reject. Which this might seem very harsh to you कि मैंने साल काम किया है और जो है ना मेरा सुपरवाइजर इज नॉट विलिंग टू राइट द पेपर और ही इज सेइंग और शी इज सेइंग कि डू दिस, आई विल नॉट डू दिस. तो वो जो सुपरवाइजर अगर कुछ कह रहा होगा ना, वो इस वजह से कह रहा है कि उसने गूगल स्कॉलर किया था, वो आपको बता नहीं रहा लेकिन किसी और ने काम कर दी है. तो यू हैव टू, या आप खुद करते रहते, रोज आते आप हर 6-7 दिन बाद उस पेपर को सर्च करते, यू कीप एन अकाउंट के भाई क्या हो रहा है नया. तो अगर आप जैसा कुछ हो गया तो देन यू ट्राई टू मॉडिफाई योर अप्रोच एंड मूव अलोंग. तो दिस इज व्हाट यू डू. दिस इज एन एक्सरसाइज वन नीड्स टू डू फ्रीक्वेंटली. दिस इज व्हाट योर सुपरवाइजर्स एंड एडवाइजर्स आर डूइंग, नॉट टेलिंग यू कि वो क्या कर रहे होते हैं ऑफिसेज में. तो दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट, अच्छा ये 10 पेपर्स में साइड कर लिया, अच्छा इसमें से जो 6 है ना ये तो हमारे काम से रिलेटेड नहीं है, तो इसको तो हम यूं नेगेट कर, बयां लिखेंगे जरूर लेकिन कहेंगे कि recently another approach has been proposed but they are working on a different sensor, our approach is for this application. So if you think you can defend, then you have to mention तो आप उसने होना है. अब आप जो आप चाहते हैं कि आप वाजे बता दें आप कैसे मुख्तलिफ हैं, काफी सारों से आप मुख्तलिफ होंगे और जिनसे आप मुख्तलिफ नहीं है उनसे फिर अब आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा. तो so let's say there are 3 papers which have cited you and you don't have the implementation for the 2 but you have the implementation for the recent most. That solves your problem. आप अगर सबकी implementation नहीं भी है तो सबसे नए वाले की होनी चाहिए. अगर वो मिल गया ना आपको तो you should feel relaxed कि अच्छा अब इसी को बीट करना है ना, यही बेस्ट है ना, इसी को बीट करना है, तो फिर एक भी काफी है. मेंशन सारे होंगे
आप कहेंगे इसने ये किया तो इसने उसको बेहतर कर दिया और मैं अब इससे कंपेयर कर लूंगा अपने आप को। तो दिस इज द डेली एक्सरसाइज यू नीड टू डू. Go to Google Scholar, check which other papers are there, and keep yourself updated. So normally what we do is that we try to solve the problem in the best way we can, not worry too much कि दुनिया में क्या हो रहा है. अगर किसी ने हमारे जैसा कर लिया ठीक है, हम फिर चेंज कर लेंगे. तो we don't make ourselves nervous too much about it. And sometimes you know that the problem is very different and chances are rare that somebody would think like this. So anyways, but you have to convince the reviewer कि जो आप सबसे रेलेवेंट पेपर्स आप बता रहे हैं उनको अगर किसी ने साइट किया है तो व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद दैट पेपर. एंड समटाइम्स यू हैव टू फ्रॉम दोज पेपर्स यू हैव टू कंपेयर. देयर इज नो चॉइस लेफ्ट. अब आपने अपना काम कर लिया, अब यू हैव टू कंपेयर. ये हमने देख लिया, ये जो मुश्किल सेक्शन था. नहीं नहीं, हम जो एक्चुअल टाइमलाइन है वही टाइमलाइन है. समटाइम्स यू कैन वायलेट द टाइमलाइन एंड यू जस्ट कैन डिवाइड कैटेगरीज. अच्छा ये सिग्नल प्रोसेसिंग वाले पेपर्स हैं, ये मशीन लर्निंग वाले पेपर्स हैं और ये कुछ और अप्रोचेज हैं. तो यू डिवाइड इट इनटू डिफरेंट सेक्शंस एंड देन नरेट वन के इन सिग्नल प्रोसेसिंग ही डिड दिस, शी डिड दिस, ये हुआ, हम इस तरह मुख्तलिफ. दूसरा इन अनदर डोमेन ये हुआ, हम इस तरह मुख्तलिफ. तो दीज आर द मोस्ट रिलेटेड पेपर्स. और तो दिस इज वेयर द एक्चुअल जो है ना वो जो 4 पॉइंट्स आपको याद हैं, पहले आपने इधर साबित करना है, आपने रिव्यूअर को साबित करना है कि सारी आपने रेफरेंसेस बता दी हैं, आपको पता है सारी रेफरेंसेस. और फिर जो है ना आपने रिजल्ट्स तो बहरहाल अब चाहिए ही हैं. तो यू कांट जस्ट इन अ लो क्वालिटी वेन्यू यू कैन जस्ट गेट अवे बाय नॉट डूइंग कंपैरिजंस. बट अब जिस तरह अब ये मैं पेपर पढ़ूंगा तो मेरा सबसे जो मेरा इंटरेस्ट है ना वो ये है कि इन्होंने जिससे कंपेयर किया वो कितना नया है. ठीक है, वो जिससे कंपेयर किया है ना मैं उसका नाम लिखूंगा, मैं गूगल स्कॉलर पे जाके देखूंगा, मैं देखूंगा किसी और ने तो कुछ नहीं किया. अगर तो वो बाकी किसी ने नहीं किया तो फिर ठीक है, अब इनकी बात वैलिड है. लेकिन अगर किसी ने कुछ किया है और वो पेपर मुझे इनके रिलेटेड वर्क में नजर नहीं आ रहे तो देन आई विल स्लाइटली इन्वेस्टिगेट के अच्छा वो रिलेटेड है कि नहीं है. तो दिस इज द एक्सरसाइज विच आई विल डू. मैंने इनका पेपर समझना नहीं है. माई जॉब इज नॉट टू अंडरस्टैंड देयर रिसर्च. My job is to just figure out that have they fulfilled all the requirements. So even if I'm not the expert in that domain, that exercise is very simple. आप भी कर सकते हैं. तो अब हमारा जो है ना ये सेक्शन खत्म हो गया. तो ये related वर्क सेक्शन में we will have different paragraphs and we will try to do exhaustive related work. अच्छा क्या टाइम हो रहा है? अच्छा एक मिनट, आप एक पेपर सर्च करें एबीसी नेट टेक्स्ट डिटेक्शन. This paper is from 2020. This is about detecting text and this is about detecting text जो इस तरह करके ना वेवी लाइंस में लिखा हो. अभी तक जो हमारे पास टेक्स्ट डिटेक्टर्स है ना वो स्ट्रेट टेक्स्ट हो जो हम नॉर्मल प्रिंट करते हैं. तो अब आप देखिएगा कि how easy they are trying to make it for the reviewer to see what is their difference with the related work. अभी once this loads, चलिए let's take a break, 10 minute break करते हैं और फिर by that time maybe this loads and we can restart.